Okay, so today we learn about how to install Prometheus in opensuse. So firstly, I'm going to terminal. Yes, so you can search Zyper SE Prometheus. Oh my, spelling is mistake. Okay, see what output. Okay, no matching because spelling is mistake. That's it right now. Okay, you can see Prometheus package also installed in my case because I have already installed Prometheus server. So simple, you can Prometheus install Zyper in Prometheus. Okay, and just press in enter. You can see my Prometheus already installed is already installed. Okay, and check the service system serial status Prometheus. Yes, it's running now, but this service is disabled. So I enable the service. Yes, my service is enabled. You can check the status and my service active running and enable the service. Okay, you can access this Prometheus server. So Prometheus server port using 9090. Okay, port are using Prometheus servers. So you can go from browser and search access the Prometheus server in browser. So localhost colon 9090. You can see my Prometheus service is proper running, and you can check the Prometheus server up and execute the file. You can see Prometheus is up. Okay, so this session is Hindi and English. So firstly I'm talking about in and spoken in English. So I talk in Hindi. So पहले हमने क्या किया है कि प्रोमीथियस के पैकेज को इंस्टॉल किया है, सिंपल सा। देन उसके बाद उसकी सर्विस को स्टार्ट किया है एंड उसकी सर्विस को इनेबल किया है। और ये प्रोमीथियस सर्वर जो है हमारा है 9090 का पोर्ट यूज करके ब्राउजर पे हमको एक्सेस मिलेगा। ठीक है ना, कौन सा पोर्ट यूज करता है, अगर आपसे पूछा जाए कौन सा पोर्ट यूज करता है तो आपको सिंपल से बताना है कि 9090 पोर्ट यूज करता है। सो यू कैन सी दिस पोर्ट। अगर आपको देखना है कि ये पोर्ट चल रहा है कि नहीं तो हाइफन SS हाइफन TUNLP एंटर। सो यू कैन चेक माय प्रोमीथियस यूजिंग दिस पोर्ट 9090। ओके, एंड इसको ब्राउजर पे एक्सेस करने के लिए आपको पता ही है कि लोकल होस्ट कोलन 9090। ओके, दैट्स इट। एनी डाउट्स एंड क्वेश्चंस प्लीज कमेंट। ओके, थैंक यू।